जीवा नमस्कार। मैं जीआई संगीता खंडेलवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी जीवा फैमिली में। जीवा हेल्थ इज वेल्थ सीरीज में जीवा में हमारी एक वैल्यू है समर्पण, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचने की, टू हेल्प देम, टू सर्व देम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, to create a long-term impact on our mental well-being. इस वक्त जहां कुछ लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं, वहीं बाकी सब भी फेस कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस, चिंता, पैनिक, घबराहट। एक अनिश्चितता है, एक डर है कि आगे क्या होगा। यहाँ हम सब एकजुट होकर कोशिश करेंगे इस मनस्थिति से बाहर निकलें और खुद को स्ट्रॉन्ग करें, एक नई आशा के साथ, एक नई दिशा के साथ। Here in this series we will help you with healing and meditation sessions on every Thursday, fitness on every Saturday, and right diet on every Tuesday for your well-being. डॉक्टर्स जहाँ सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। We are not doctors, so we cannot interfere in the medications. We cannot, judge them or ask them what they are doing. We need to honor and be grateful to all of them, to all the medical staff, to all the doctors, to all the sisters for giving their day in and day out, managing everything so well to the best of their ability. The numbers are increasing, so even they are helpless at times, But what we can do is we can do our bit. 5% of the people are infected, but 95% are panicking. Let us get down and understand how to keep our thoughts positive and not panic. आज के इस सीरीज में बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ की, पॉजिटिव थॉट्स की। हर जगह हर कोई कहता है थॉट्स को पॉजिटिव रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो। सवाल है कैसे? टीवी खोलो, नेगेटिव। किसी से बात करो, नेगेटिव। कोई सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, व्हाट्सएप खोलो, negative. That is all that we are getting today. Let us not get overwhelmed by this. Let us not get overwhelmed by over listening to the news channels. Yes, of course, we need to keep ourselves updated, but उसको limit करने की ज़रूरत है। उतना ही सुनो जितना ज़रूरी है। Focus on positivity. Thoughts होते क्या हैं? You will be surprised to know that there are 70,000 random thoughts in our mind every single day. Each thought is powerful. Each thought that we have affects our health and our happiness. कहते हैं ना, विचारों में भी बरकत होनी चाहिए। Thoughts should always be positive. जो हम सोचते हैं वही हमारे चारों तरफ का यूनिवर्स ग्रास्प करता है and returns to us multi-fold. जो सोचते हैं वो होता है। How it is when you smile, the world smiles at you. So जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। This is the value. This is how the universe operates. तो अगर हम positivity देंगे, that is what we will get. If we give out fears, that is what we will get. And fears is actually very, very low vibration, whereas love is very high vibration. Let me give you an example. We all know how to imagine. Okay, so let's imagine that there is a road. आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपके सामने एक रोड है। क्या दिख रहा है आपको? गाड़ियां आती जाती नजर आ रही है, लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, पेवमेंट पे लोग चल रहे हैं, एक ट्रैफिक लाइट है वहां। इमेजिन करिए कि वो ट्रैफिक लाइट रेड हो रही है।
जब वो ट्रैफिक लाइट रेड होती है, ट्रैफिक अपने आप रुक जाता है और लोग रोड क्रॉस करने लगते हैं। जैसे ही वो लाइट ग्रीन होती है, ट्रैफिक वापस चल जाता है और लोग रुक जाते हैं। अब इमेजिन करिए कि वो ट्रैफिक लाइट है ही नहीं वहां पर। क्या होगा उस रोड का? क्या इमेजिन कर रहे हैं आप? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू कैन सी नाउ। Yes, absolutely. You can see commotion, you can see chaos, you can see crashes happening, you can see accidents. This is exactly what happens to our mind. Yes, there is noise, there is commotion. Perfect. Again, the same thing happens to our mind. अगर हम अपने विचारों को मॉनिटर नहीं करते हैं, this is what happens. It creates a chaos in our mind. हम सारा टाइम सोचते रहते हैं उल्टा सीधा, थॉट्स पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कुछ भी आ रहा है, आए जा रहा है और हम बेवजह थक जाते हैं बिना किसी काम किए भी। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जब हम बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं, जब हम उन थॉट्स को मॉनिटर करे बिना अपने अंदर आने देते हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस। वी जस्ट गेट टायर्ड, वी गेट sick mentally. पॉजिटिव सोच बोलने से नहीं आती, यहाँ आती है माइंडफुलनेस। We have to keep our mind full under one category. एंजाइटी और पैनिक होता है जब हम फ्यूचर में जीने लगते हैं। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, घर में इन्फेक्शन आ गया, अब क्या होगा। हो सकता है कि वो बहुत माइल्ड हो और वैसे ही ठीक हो जाए, मगर हमें आदत है बिल्कुल बुरा सोचने की, फ्यूचर में सोचने की। क्या कर सकते हैं हम? कैन वी लिव इन द प्रेजेंट? जब हम प्रेजेंट में सोचते हैं, ऑटोमेटिकली हम ब्लिसफुल हो जाते हैं। वी स्टार्ट फीलिंग गुड। Bring your thoughts in the present, enjoy and live in the moment. Let us do another activity. This is an activity which psychologists and well-being coaches use a lot in their sessions. Sit down comfortably and use your 5 senses. कौन से हमारे 5 senses? Taste, touch, smell. कौन बता सकता है मुझे बाकी दोनों फटाफट? चैट। Come on, 5 senses. Absolutely. To see, to feel, to touch, to listen. Hear, touch, smell, taste, sight. Perfect. Mehak, very, very perfect. So, these are our 5 senses. Now, let us start using them. Okay? Let us start by observing the things around us. क्या नजर आ रहा है आपको अपने रूम में? I'm thinking that most of you are sitting in a room. Some of you may be quarantined and not going out of the room at all. So let us start with seeing what is there in our rooms. What can you see? Observe and write 3 things that you see in the room. If you're in the garden, okay. So just observe and tell me, what do you see? Focus. So good. People can see garden, water, cats, TV, family pic. That's very good. AC, window, trees, sky, birds. Purnima says a small temple.
Bed, chair, table, children, mirror, clock, AC, perfect. So when you observe these things, आपका दिमाग कहाँ था? आपके thoughts कहाँ थे? क्या वो कहीं और थे? No. When you focus on small things, the thoughts get focused and come to the present. This is what mindfulness is. Right? Now we can also start listing 3 things that you can touch and feel, or maybe just 2 things that you can touch and feel around you. Wow, Sangeeta, you can feel the air. That's so good. So when you can feel the fresh air, when you can feel the pillow, the book, you can feel the softness of your clothes, the vibrant air, the cool it is affecting. Okay, phone, that's the most important thing आजकल. सब अपना phone सबसे ज़्यादा. So, even your phone, if it is good to your touch, if it is soft, अगर आपने अपने phone पे cover लगा रखा है, it should always feel good when you touch it. It should not be rough. It should not make you feel bad. So always surround yourself with things which make you feel good and which make you feel comfortable. Yeah? अगर आप बाहर हो, so you can, if you're in your garden, just touch the soil. Feel the texture of it. It feels so good. Touch the petals of the leaves. Touch a leaf. Go and hug a tree. That feels so good. That feels so good. Now tell me again 2 things that you can hear. AC ka sound, honk, voice, laughter, bells, children making the noise. Wow, that's so good. Mom teaching, birds chirping, kids' voice, scooter, your own thoughts. Who is this Monica? Perfect. Your own thoughts. Nothing better to hear than your own thoughts. Oh wow, Tapushi, you can hear peacock sound from the Central Park. Wow. Koyal, my daughter talking. That's Kavita Mathur. That's such a sweet voice. Shobha says your sweet voice. Thank you, Shobha ji. Thank you so much. So when you can focus and hear your breathe. Yes, Leena, that's perfect. There is nothing better than you can feel. There is nothing better than you can hear. When you hear your own sound, when you hear the sound, you can even hear small things. And it's not कि अभी आप कमरे में हैं तो आप ये focus कर रहे हैं. मान लो आप kitchen में work कर रहे हो. You can still start doing this activity and get yourself in a thoughtless state of mind. You can listen to the sound. आपने छौक लगाया, वो जीरे का जो sound होता है खट-खट करता हुआ. You can just listen and focus on that sound. You can smell the aroma. Also, when we focus on smell, we can focus on, taste. Though I know some people who would be COVID affected would have lost their sense of taste and smell at this time. But when you get don't get perturbed by such things, When you're having your coffee, and you can smell it, the aroma is something out of the world. You just focus on it. So these are small things which give you pleasure, which make you happy, as well as bring you to a thoughtless state of mind. We can also, when you create, also there are few things that can make you feel positive. Now that we have come to a thoughtless state of mind, अब हमारे दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है इस टाइम, कोई और सोच नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. Our thoughts are focused, our thoughts are pure, and here we can now do something. Now the thoughts, we can shift them towards positivity. And how do we shift our thoughts?
towards positivity. We can create affirmations. छोटी छोटी affirmations हैं जो आप खुद अपने लिए बना सकते हो, लिख सकते हो, and you can just affirm them a few times a day. You can maybe also write them and stick them somewhere जहाँ वो आते जाते आपको दिखे, आप उनको पढ़ सकते हो. Affirmations like my immune system is strong. I am worthy to keep the virus away. I am strong and healthy. Everyone around me is strong and healthy. All is well. ये छोटी छोटी affirmations हैं. आप सोचोगे आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा. So keep affirming them, keep repeating them a few times a day, and it would surely help you out. It would surely help to keep your thoughts positive. It would surely help to create, a strength within you. आप इस बात को समझिए कि अगर आपके घर में भी कोई बीमार है या अगर आप भी बीमार हैं, तो ज़रूरत क्या है? पैनिक करने की? नो. ज़रूरत है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की. और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी स्ट्रेंथ को वापस से ला सकते हैं. So these are the few things that we can do. Meditation helps a lot in keeping yourself positive and keeping yourself strengthy. Are you all game for a small meditation? Should we do it? Yeah? Okay. So close your eyes. Sit down very, very comfortably. If you wish, you may lie down. That's also okay. Take a deep breath in. Breathe in through your nose. Breathe out through your mouth. Take another deep breath in. As you breathe in, feel the beautiful white light from outside, from the Creator, from the universe, from the God, entering into each and every cell of your body, entering through your nose and filling every cell of your body. Feel this beautiful white light engulfing you. Breathe out. As you breathe out all the darkness within you. अपने अंदर जितना कुछ आपको ठीक नहीं लगता, जो कुछ डार्क है, उन सबको अपनी सांस के द्वारा बाहर निकाल दो. As you breathe in, feel the fragrance of the rose in the distance entering you. दूर वो जो गुलाब खिला हुआ है, उसकी खुशबू को महसूस करो. उसको अपने हर सांस में महसूस करो. महसूस करो कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है. अपने अंदर के सारे डर को अपने बाहर छोड़ती हुई सांस के द्वारा निकाल दो. Take out all your fears, all your negative thoughts and release them. महसूस करो कि आप बिल्कुल पीसफुल हो. completely peaceful. यहाँ पर सिर्फ आप हो. The external world ceases to exist. बाहर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आपकी सांसें हैं. अपनी सांसों पे फोकस करो. अंदर जाती हुई सांस को देखो.
कैसे वो आपके हर सेल को, हर ऑर्गन को प्यार से भर रही है। आप सिर्फ और सिर्फ एपिटोम ऑफ लव हो। महसूस करो अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल फ्री। See your heart singing a joy, with the joy, a beautiful song of love, a beautiful song of peace. Focus on your heart chakra. See your heart very, very happy. See your heart blissful. Imagine that you're completely at ease and at peace. Now imagine 5 people who are very close to you, standing in front of you. इमेजिन करो कि आपकी रिलेशनशिप इन 5 लोगों के साथ बिल्कुल बदल गई है। आपके रिलेशनशिप के सारे रिजेंटमेंट्स, सारे ग्रजेस, सारा गुस्सा सब निकल गया है और ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गई है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। फील दिस बॉन्ड getting stronger and stronger. At this point of time, give gratitude to them for all that they have done in your life. Give gratitude to Mother Earth and ask for forgivenesses for the way we have mistreated Mother Earth. कितना हवॉक मचाया है हमने। हम उन सब के लिए माँ से माफ़ी मांगते हैं। Imagine that you are hugging these people, creating a beautiful bond in your life, completely happy and peaceful. Focus on your breath. Very slowly, you may just open your eyes. How does it feel? We can do this every day. Any small meditation जो आपको सूट करे। और यहाँ से निकल के प्लीज भूलना नहीं है, इसको करते रहना है। मेडिटेट करिए अपनी फैमिली के साथ में। Let them all do it, even if it is small children. Thank you everybody. If there are any questions, we can just take a few. Also, if there are any questions, there is our Facebook page, Jeevagiri. You may just write questions on them and I would try and answer
all of them, or at least most of them, till we meet next week. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव बने रहिए. Thank you everyone. Over to you, Monica. Jeevan, namaskar to everybody. Thank you so much, Sangeeta ma'am, for such a beautiful, enriching and positive session. It was truly very, very relaxing. I'm sure everybody enjoyed. We can see in the chat box how refreshed everybody is feeling. Thank you so much for taking out time for this. Thank you everybody, all of you who've taken out time to join us in this session. आई एम श्योर जैसा कि मैं फील कर रही हूँ, आप लोग भी फील कर रहे होंगे इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में. सो मच ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग फ्रॉम संगीता मैम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. We also have a session on Saturday, 3 p.m. the same time. Which is being done by our own J.I. Sadhana Gupta ji. Then we also have another session on coming Tuesday, again at the same time, 3 p.m. being done by our own GI Nidhi Khemka ma'am, who's going to be advising us on the diet. So my humble request, it's a free session. Please come all and make it success like we've done it here. Invite your friends, whoever you feel would be in need of this session. Please come and attend us. Thank you so much for being a part of it. Thank you.